अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और लेट्स स्टार्ट विद आवर रमज़ान कुरान चैलेंज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा, दी ओपनिंग। In the name of Allah, most gracious, most merciful. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. Most gracious, most merciful, master of the day of judgment. You do we worship, and your aid we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, those whose portion is not wrath, and who do not go astray. इसके बारे में डॉक्टर इशरार अहमद ने एक बड़ी अच्छी इन्फ्रेंस बताई है कि ये आधी सूरत अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रही है और आधी सूरत हमारे लिए है। ईया का नाबुदू तक है अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बढ़ाई। ईया का नस्तईन, हम तुझ ही से मांगते हैं, उसके बाद पूरी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल बकरा। In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alif Lam Mim. This is the book, and it is guidance, sure, without doubt, to those who fear Allah, who believe in the unseen, are steadfast in prayer, and spend out of what we have provided for them, and who believe in the revelation sent to you and sent before your time, and in the hearts have the assurance of the hereafter. They are on true guidance from their Lord, and it is these who will prosper. And to those who reject faith, it is the same to them whether you want them or you do not want them. They will not believe. Allah has set a seal on their hearts and on their hearing, and on their eyes is a veil. Great is the penalty they incur. May Allah protect us from being such people. Of the people there are some who say we believe in Allah and the last day, but they do not really believe. Fain would they deceive Allah and those who believe, but they only deceive themselves and realize it not. असल में लोग कहते हैं कि हम आखिरत को मानते हैं और अल्लाह में यकीन रखते हैं, बट वो नहीं करते और वो सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अल्लाह ताला को कुछ ऐसा नहीं कर सकते वो। In their hearts is a disease, and Allah has increased their disease, and grievous is the penalty they incur, because they lied to themselves. और जो वो कर रहे हैं वो बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। And when it is said to them, make not mischief on earth, they say, why we are only those who put things right. भाई हम तो सिर्फ अच्छा करते हैं, हम तो कुछ बुराई नहीं फैला रहे। Of a surety, they are the ones who make mischief, but they realize it not. When it is said to them, believe as the others believe, they say, shall we believe as the fools believe? No. Of a surety, they are the fools, but they do not know. Why then meet those who believe? When they meet those who believe, they say we believe. But when they are alone with the evil ones, they say we are really with you, we are only jesting. जब यकीन वालों के साथ होते हैं उनको बोलते हैं हम मानते हैं, बट जब बुरे लोगों के साथ होते हैं, evil ones के साथ होते हैं, तो बोलते हैं हम तो असल में आपके साथ ही हैं। Allah will throw back their mockery on them, and give them rope in their trespasses, so they will wander like blind ones, hither and there. वो इधर उधर भटकते रहेंगे। These are they who have bartered guidance for error, but their traffic is profitless, and they have lost true direction. इन लोगों ने बार्टर कर ली है, अदला बदला कर लिया है, हदायत देके और एरर ले लिया है, इविलनेस ले ली है, बुराई ले ली है, और बहुत बुरा तिजारत है, ये अच्छी तिजारत नहीं है। Their similitude is that of a man who kindled a fire. When it lighted all around him, Allah took away their light and left them in utter darkness, so they could not see. अब उनकी मिसाल ऐसी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक बंदा उसने आग जलाई और जैसे ही आग जली रोशनी फैली, उसकी बिनाई चली गई। बिल्कुल ऐसी मिसाल है इनकी। Deaf, dumb and blind, they will not return to the path. Or another similitude, एक और मिसाल, is that of a rain laden cloud from the sky. In it are zones of darkness and thunder and lightning. They press their fingers in their ears to keep out of the stunning thunderclap. The while they are in terror of death, but Allah is ever round the rejectors of faith.
The lightning all but snatches away their sight. Every time the light helps them, they walk therein. And when darkness grows on them, they stand still. And if Allah willed, He could take away their faculty of hearing and seeing, for Allah has power over all things. O you people, worship your guardian Lord who created you and those who came before you, that you may have the chance to become righteous. Who has made the earth your couch and heavens your canopy, and set down rain from the heavens, and brought forth therewith fruits from your sustenance, for your sustenance? And set not up rivals unto Allah, when you know the truth. And if you are in doubt as to what we have revealed from time to our servant, then produce a surah like thereunto, and call your witnesses or helpers, if they are any besides Allah, if your doubts are true. बेसिकली इस आयत में कुरान एक लिटमस टेस्ट दे रहा है कि भाई हमने जो वही नाजिल करी है अपने नबी, अपने रसूल पे, अपने सर्वेंट पे, अगर आपको कोई डाउट है उस पर, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अपने सारे हेल्पर्स को और विटनेसेस को ले आओ, देखते हैं तुम जैसी सूरत नहीं ला सकते. बट इफ यू कैन नॉट एंड ऑफ अ श्योरिटी यू कैन नॉट. अब देखें, एक चीज होती है टेस्ट देना और एक होता है कि चैलेंज और टेस्ट दिया ना और आपने कॉन्फिडेंस चेक करें. बट इफ यू कैन नॉट एंड श्योरिटी यू एंड ऑफ अ श्योरिटी यू कैन नॉट, मतलब तुम नहीं कर सकते और तुम हरगिज नहीं कर सकते. देन फेयर द फायर whose fuel is men and stones, which is prepared for those who reject faith. But give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is gardens beneath which rivers flow. Every time they are fed with fruits therefrom, they say, why? This is what we were fed with before. For they are given things in similitude, but they have therein companions pure and holy, and they abide therein forever. Allah disdains not to use the similitude of things, lowest as well as the highest. Those who believe know that this is the truth from their Lord, but those who reject faith say, what means Allah by this similitude? By it he causes many to stray, and many he leads to the right path, but he causes not to stray except those who forsake the path. Those who break Allah's covenant after it is ratified, and who sunder what Allah has ordered to be joined, and do mischief on earth, these cause loss only to themselves. इसमें एक मिसाल है कि अल्लाह ताला मिसालें देके समझाते हैं और इन्हीं मिसालों से अल्लाह ताला कुछ को हदायत के रास्ते पे दिखाता है और कुछ लोग एस्ट्रे चले जाते हैं. और अल्लाह ताला किसी को स्ट्रे नहीं भेजता एक्सेप्ट दोज हु फॉरसेक द पाथ, बल्कि वो जो खुद ही गुमराह होना चाहते हैं. हाउ कैन यू रिजेक्ट द फेथ इन अल्लाह, seeing that you were without life and he gave you life? Then he will cause you to die and will again bring you to life, and again to him will you return. हम कुरान सवाल कर रहे हैं हमसे कि हम अल्लाह ताला में फेथ कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं. हम नहीं थे और उसने पैदा किया और फिर वो मारेगा, फिर दोबारा पैदा करेगा और उसके पास ही लौट के जाना है. It is he who has created for you all things that are on earth. Then he turned to the heaven and made them into 7 firmaments, and of all things he has perfect knowledge. Behold, your Lord said to the angels, Allah Ta'ala फरिश्तों से कहता है, I will create a vicegerent on earth. They said, will you place therein one who will make mischief therein and shed blood, while we do celebrate your praises and glorify your holy name? He said, I know what you know not. ये एक ऐसा सवाल है जो कि फिलोसफी में बहुत डेप्थ में डिस्कस होता है, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल. और जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं या इनफैक्ट जो गॉड में नहीं मानते, वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल दे टेक इट एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. और कुरान इसी को बोल रहा है, इसी का वाक्य बता रहा है कि फरिश्तों का भी यही सवाल था कि फरिश्ते अल्लाह ताला से पूछते हैं कि भाई आप ऐसी मखलूक क्यों बना रहे हैं जो खून खरेजी करेगा दुनिया पे. तो अल्लाह ताला कहता है मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता. एंड ही टॉट Adam the names of all things, and then he placed them before the angels and said, tell me the names of these if you are right. अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ों के नाम सिखा दिए और फिर कहा कि ये नाम बताओ.
फरिश्तों को कहा कि नाम बताओ मुझे, तो फरिश्ते जवाब देते हैं, दे सेड ग्लोरी टू यू ऑफ नॉलेज, वी हैव नन बट वट यू हैव taught us, in truth it is you who are perfect in knowledge and wisdom. बेसिकली फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला हमें वही पता है जो आपने हमें बताया है, आपकी नॉलेज परफेक्ट है और आपकी विजडम भी परफेक्ट है. He said, O Adam, tell them their names. And when he had told them their names, Allah said, did I not tell you that I know the secrets of the heaven and the earth, and I know what you reveal and what you conceal? And behold, we said to the angels, bow down to Adam, and they bowed down. Not so Iblis, he refused, he was haughty, and he was of those who reject faith. अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुक जाओ, तो सब झुक गए अदर देन इब्लीस, अपने फखर की वजह से, प्राउड की वजह से, गरूर की वजह से. वी सेड, ओ आदम, dwell you and your wife in the garden and eat of the bountiful things therein, as where and when you will, but approach not this tree, or you run into harm and transgression. अच्छा, इसके डॉक्टर जेफरी लैंग की अगर आप बुक्स देखेंगे, स्ट्रगलिंग टू सरेंडर और लूजिंग माई रिलीजन अ कॉल फॉर हेल्प, he has taken these few ayats as his inspiration for converting to Islam. कि इस आयात से उसको डॉक्टर जेफरी लैंग को पूरा प्रॉब्लम ऑफ इवल रिजॉल्व हो गया, एंड he was basically impressed through these ayat. May Allah guide us also. हम डिटेल में नहीं जा सकते अभी डॉक्टर जेफरी लैंग ने क्या कहा. आई सजेस्ट यू रीड हिज बुक्स एंड इंशाअल्लाह ताला आई विल ट्राई टू कवर अ रिव्यू ऑफ दोज बुक्स ऑल्सो. Then did Satan make them slip from the garden and get them out of the state of felicity in which they had been. We said, get you down, all you people, with enmity between yourselves on earth will be your dwelling place and your means of livelihood for a time. Then learned Adam from his Lord words of inspiration, and his Lord turned towards him, for he is oft returning most merciful. जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती हो गई, जिस पे डॉक्टर जेफरी लैंग ने भी काफ़ी एम्फसाइज किया अपने लेक्चर्स में, स्लिप, छोटी सी गलती हो गई, तो वो जन्नत से निकल गए, दुनिया पर आ गए, या जो उनका सानिया थी वो अल्लाह ताला ने उनसे ले ली. तो फिर अल्लाह ताला ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंस्पायर करते हैं कि इस तरह आप इबादत करो, इस तरह माफ़ी मांगो. अल्लाह ताला इज ऑफ्ट रिटर्निंग मोस्ट मर्सीफुल. वी सेड, गेट यू डाउन ऑल फ्रॉम हियर, एंड इफ as is sure there comes to you guidance from me, whoever follows my guidance on them shall be no fear, nor shall they grieve. But those who reject faith and believe our signs, they will be companions of the fire, they shall abide therein. O children of Israel, call to mind the special favor I bestowed upon you, and fulfill your covenant with me as I fulfill my covenant with you, and fear none but me. यहाँ पे आई वुड लाइक टू एम्फसाइज वन थिंग कि ये चिल्ड्रन ऑफ इसराइल से मुराद है कि जो इजराइली नेशन है जिसमें इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिसके पास शरीयत थी. अब हम ये पढ़ के समझते हैं हमसे लिंक्ड नहीं है, हमसे रेलेवेंट नहीं है. असल चीज़ यही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और हम भी वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो इन लोगों ने करी, जो इन लोगों से रिपीट हो गई. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. And believe in what I reveal, confirming the revelation which is with you. And be not the first to reject faith therein, nor sell my signs for a small price, and fear me and me alone. अल्लाह ताला कहता है मेरी आयात को एक सस्ती कीमत पे ना बेचो और मुझसे डरो. And cover not truth with falsehood, nor conceal the truth when you know what it is. और हक को बातिल से ना छुपा दो, और ना हक को छुपाओ ये जानते हुए कि ये सच है. And be steadfast in prayer, give zakat, and bow down your heads with those who bow down in worship. Do you enjoin right conduct on the people and forget to practice it yourselves? And when you study the scripture, will you not understand? इसमें एक सवाल है, अल्लाह ताला कर रहा है लोगों से कि आप लोगों को नेकी का काम कहने को कहते हो. Do you enjoin right conduct on the people and forget to practice it yourselves? ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान है कि हम लोगों को तो कह रहे हैं कि भाई आप अच्छा काम करो, नेकी का काम करो, फलाना ना करो. क्या हम खुद वो कर रहे हैं? No, seek Allah's help with the patient perseverance and prayer. It is indeed hard, except to those who are humble.
who bear in mind the certainty that they are to meet their Lord and they are to return to him. और देखिए, अच्छा काम करना, ये अच्छाइयाँ करना, ये बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट उन लोगों को भी जो अल्लाह ताला पे पक्का यकीन रखते हैं. O children of Israel, call to mind the special favor which I bestowed upon you, and that I preferred you to all others for my message. Then guard yourself against a day when one soul shall not avail another, nor shall intercession be accepted for her, nor shall compensation be taken for her, nor shall anyone be helped from outside. ये अल्लाह ताला बता रहा है कि उस दिन के लिए तैयारी रखो, उस दिन से बचे रहो जब किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई चीज काम नहीं आएगी. And remember, we delivered you from the people of Pharaoh. They set you hard tasks and chastisement slaughtered your sons and let your women folk live. Therein was a tremendous trial from your Lord. And remember, we divided the sea for you and saved you and drowned Pharaoh's people within your very sight. और इस आयत में ये बात हो रही है फाइनली कि अल्लाह ताला ने आपको फ़ैरो से बचाया था, और जब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा समुंदर में मारा तो समुंदर फट गया था और ये निकल गए थे. अल्लाह ताला इन लोगों को याद दिला रहा है कि मैंने आप पे ये एहसान भी किया. एंड आई ब्लेस्ड यू विद दिस ऑल्सो. यहाँ तक हमारी सूरह बकरा की 50 आयत पूरी हो गई हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.